ગીર સોમનાથના વેરાવળ બંદર ખાતે આવેલ કેન્દ્ર સરકારના એકમ સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફિશરીઝ રિસર્ચના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા પફર ફિશ નામની માછલીમાં રહેલ ઝેરના કારણે થયેલ મૃત્યુના કેસમાં રિસર્ચ કરી છે, જેને આંતરરાષ્ટ્રીય ફોરમમાં માન્યતા મળી છે। પફર ફિશ એ અરબી સમુદ્રમાં અને ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં પુષ્કળ માત્રામાં જોવા મળે છે। આ માછલીના કિડની સહિતના ભાગોમાંથી નીકળતું ટેટ્રા ઓડોટોક્સિન જીવલેણ હોય છે અને એટલું સક્રિય હોય છે કે રાંધ્યા બાદ પણ તેનો નાશ થતો નથી। ત્યારે 4 માછીમારોએ આ માછલી ખાતે એકનું મૃત્યુ થયું હતું અને 3ને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા હતા। ત્યારે આ મામલામાં CIFTના મહિલા વૈજ્ઞાનિકો ડોક્ટર અનુપમા ટીકે કેસ હિસ્ટ્રી એકઠી કરી હતી અને જે માછલી ખાઈને પોઈઝનિંગ થયું હતું તેના અંશો લઈને તેનું DNA ટેસ્ટ કર્યું હતું અને અંદાજે 1 વર્ષની રિસર્ચ બાદ પૂરતા રાસાયણિક પુરાવાઓ સાથે સાબિત કર્યું હતું કે પફર ફિશ ખાદ્ય હોવા છતાં તેને યોગ્ય રીતે ન પકાવાતા ગંભીર અને જીવલેણ પરિણામો આવી શકે છે। ત્યારે ઉલ્લેખનીય છે કે જાપાન સહિતના દેશોમાં પફર ફિશ કુક કરવા માટેના અલગથી કોર્સ બનાવવામાં આવ્યા છે, જેથી આ માછલી બનાવ્યા બાદ તેમાં ઝેર ન રહે। मई 2020 में एक पॉइजनिंग का केस आया था, तो फिर हम लोगों को कुछ पुलिस अप्रोच किए कि क्या कुछ ऐसा पॉइजनिंग है फिश में। तो फिर हमारे यहाँ एक टीम लीडर थे डॉक्टर टॉम सी जोसेफ और डॉक्टर अनुपमा टीके। उन लोगों ने पुलिस टीम के साथ बात किया, फिर डॉक्टर के पास गए और फिर उनका केस हिस्ट्री पता किया तो मालूम चला कि ये पफर फिश पॉइजनिंग है। और पफर फिश पॉइजन जो है बहुत लीथल डेडली पॉइजनिंग होता है। ये एक्चुअली उनसे निकलने वाला जो टॉक्सिन है टेट्राओडोटॉक्सिन बोलते हैं उसको, और इवन आफ्टर कुकिंग ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। यहाँ बहुत पाया जाता है पफर फिश, तो बिकॉज ऑफ उनके अज्ञानता के कारण या उनको उतना आभास नहीं होगा तो उन लोगों ने खा लिया। उसमें से एक आदमी मर गया था और जो बाकी थे हॉस्पिटलाइज थे। तो डॉक्टर अनुपमा टीके हैज़ टेकन ऑल द स्टेप्स और वो हॉस्पिटल गई, डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट की, केस हिस्ट्री लिया। उसके बाद केस हिस्ट्री को एनालाइज करने के बाद हम लोग जो फिश वो लोग खाए थे वो भी उनसे लेके उसका DNA टेस्ट करवा के स्पीसीज इस्टेब्लिश किए और उसके बाद हम लोगों ने इंटरनेशनल जर्नल में ये किया, इसको सबमिट किया एक रिसर्च पेपर लेड बाय डॉक्टर टॉम सी जोसेफ, डॉक्टर अनुपमा टीके, और अभी वो एक्सेप्ट हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने इसको मीन्स न्यूज़ में कि ये अवेयर हो जाए आदमी लोग कि इस तरह का पॉइजनिंग फिश में हो सकता है, तो खाने के पहले ये ध्यान रखें कि कौन सा स्पीसीज है। इसी के कारण से हम लोग इसको न्यूज़पेपर में और इवन आपके चैनल पे ये बता रहे हैं कि जब भी आप फिश खाएं तो ये इंश्योर करें कि कौन सा स्पीसीज है, कहीं ये पफर फिश तो नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसे खाते हैं, पफर फिश पॉइजनिंग जो है ये इवन कुकिंग के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और बहुत सारा सिम्टम्स है, कार्डियक सिम्टम्स है, न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स है, नम्बनेस है, गिडीनेस, वोमिटिंग, मीन्स बहुत सारा ऑब्वियस सिम्टम्स है। लेकिन समटाइम्स इवन डॉक्टर विल नॉट नो कि कौन सा पॉइजन से ये हुआ है। लकीली ये जो है आधा खाया हुआ फिश था, वो उन लोग बता सके इवन पुलिस में और डॉक्टर को, जिससे कि हम लोगों को मालूम चल गया कि ये फिश पॉइजनिंग है। पफर फिश एडिबल तो है, बट आपको ये मालूम करना होगा कौन सा पोर्शन एडिबल है। इनका गोनाड है, लीवर है, किडनी है, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिपिड डिपोजिशन होता है तो वहाँ पे ये टेट्राओडोटॉक्सिन जो है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर आप दूसरे कंट्री में जाएंगे, जैसे जापान वगैरह में, आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि पफर फिश को कुक करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स होता है कि आपको कैसे पफर फिश कुकिंग करना है और कौन सा एडिबल पोर्शन है, कौन सा नॉन एडिबल पोर्शन है। तो हम लोगों को वो ध्यान रखना चाहिए। अभी हम लोग मीन्स डॉक्टर अनुपमा टीके मीन्स एडवाइजरी बना रही हैं, उसके बाद हम लोग फिशरमैन कम्युनिटी में जाएंगे और उनको बताएंगे। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि फिशरमैन के बीच में ये जानकारी उपलब्ध हो कि ये फिश अगर खाना है तो कैसे खाना है। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और एडवाइजरी बना रहे हैं। जब एडवाइजरी बनाएंगे तो हम लोग लोकल लैंग्वेज में भी, गुजराती में, हिंदी में और ऑब्वियसली इंग्लिश में भी बनाएंगे।
तो उससे फिशरमैन कम्युनिटी थोड़ा जागरूक हो जाएगा। 2020ના મે મહિનામાં વેરાવળ બંદર ખાતે 4 પરપ્રાંતીય મજૂરોએ પફર ફિશ ખાધી હતી, જેનાથી તેમને હેવી ફૂડ પોઈઝનિંગ થયું હતું, જેમાં એક વ્યક્તિનું મોત પણ થયું હતું, જેમાં શંકા જતા પોલીસે CIFTના વૈજ્ઞાનિકોનો સંપર્ક કર્યો હતો। ત્યારે તત્કાલીન મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક ટોમ જોસેફની અધ્યક્ષતામાં વૈજ્ઞાનિકોની ટીમે આ મુદ્દે મહિનાઓ સુધી રિસર્ચ કરીને પફર ફિશ પોઈઝનિંગનો ભારતનો પહેલો બનાવ સાબિત કર્યો હતો। So there is a case was reported in May 2020 that is for immigrant workers who have consumed the fish from the market and they are got poisoned. Among that 4 persons, whether before reaching to the hospital, one has got passed away and they got symptoms even within 15 minutes after the consumption of this fish, and they got the symptoms like dizziness, vertigo, apnea or heaviness of the head and all. So and they were hospitalized on that day. These police from the Prabhas Patan, they have approached us with this. Even one passed away, I have already informed. So they approached us and to know what is this about the species or what is the kind of fish and all they have to know. So when we got the samples and we have taken that, it was a cooked fish and all. So they have consumed after cooking and all. So that fish, from that we have taken out the DNA of that fish and we have analyzed to know the which species it is. So after that DNA we have taken and we have to study over our lab and we analyzed and sequenced and came to know it is a puffer fish and which is called as steelate puffer and is a common scientific name is called Erythrodon stellatus. This was the fish and that was the first confirmed case of pufferfish poisoning which was reported from India, and we have given for international public and it was accepted in an international publication. This journal called Toxon. ત્યારે આ મામલે CIFT દ્વારા એડવાઇઝરી બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે, જેના કારણે આ ખાદ્ય પણ જીવલેણ માછલીના કારણે બીજા કોઈનું મૃત્યુ ન થાય। આ એડવાઇઝરી હિન્દી, ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં પણ બનાવવામાં આવનાર છે। Dr. Anupama is now working on this pufferfish poisoning network. So together we are all contributing to preparing the advisories and how to process or how to do the cutting and all, so that we will make advisories and that will be beneficial for the fishermen and those who are taking the fish also. રાકેશ પરડવાનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, ગીર સોમનાથ।